मैं कहना चाहूँगी। सफर में धूप होगी ही, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में लेकिन तुम भी निकल सको तो चलो। निदा फाजली साहब की इन पंक्तियों को यदि किसी ने सच करके दिखाया है तो वो है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 की इस साल की 20th रैंक होल्डर अनुष्का शर्मा। अनुष्का के बारे में बताना चाहेंगे कि इन्होंने सिटी यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से अपनी बीबीए इन इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। 2019 में बतौर अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद ये इंडिया आई और यहाँ पर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा देने की ठानी, और ठानी ही नहीं बल्कि अपने आप को उसमें सफल भी करके दिखाया। 20th रैंक लाने वाली अनुष्का शर्मा का हम विजन आईएएस यूपीएससी लक्ष्य में हार्दिक स्वागत करते हैं और आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी। हाय अनुष्का, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपका क्या रिएक्शन था, बिकॉज जैसा कि हमें ये पता चला कि आपका ये तीसरा प्रयास था और तीसरे प्रयास में आपने इतनी इम्प्रेसिव रैंक लेके आई आप। तो just tell us something about your reaction. How did you feel? पहले तो सिंक इन नहीं हुआ बहुत देर तक, क्योंकि आई वॉज होपिंग इस बार नाम लिस्ट पे होगा, क्योंकि मेंस बेटर हुआ था और इंटरव्यू भी बेटर हुआ था लास्ट टाइम से। बट आई थिंक 20th रैंक वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। एंड जब रात तक शाम तक वो सिंक इन हो गया कि अच्छा रिजल्ट आ गया है, आई थिंक देयर वॉज इमेंस ग्रैटिट्यूड फॉर दिस रैंक एंड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली गेट टू बी अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। राइट। तो अनुष्का, जो सबसे ज़्यादा क्यूरियस आपकी जर्नी के बारे में हमें बात लगती है वो ये है कि आपने बाहर पढ़ाई की, न्यूयॉर्क में आप रहीं 4 साल, और यू नो आई एम श्योर हमारे स्टूडेंट्स को और जितने भी व्यूअर्स इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि वाई वुड यू लीव अ गुड लाइफ इन न्यूयॉर्क। वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ की ऑब्वियसली कोई कमी नहीं रही होगी। सो व्हाट इज़ इट दैट मोटिवेटेड यू टू कम बैक टू द कंट्री एंड टेक दिस प्लेज दैट यू वुड take the civil service exam and serve the country? इसके 2-3 रीजंस थे। एक तो जो मेरा इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड था, दैट प्रोवाइडेड मी विद अ टूल किट विच हैड डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन इन पब्लिक पॉलिसी। एंड द सेकेंड रीज़न वॉज माई इंटर्नशिप एट द यूनाइटेड नेशंस। तो मैंने 3 महीने इंटर्नशिप्स करी थी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट में, एंड आई यूज टू वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो हैविंग सीन की जो इशू है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन में नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में भी है। दैट वॉज लाइक द लास्ट स्टोन विच मोटिवेटेड मी टू गो एंड ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। एंड जब एक बार वापस आ गई तो मेरे नाना जी स्पेशली ही मोटिवेटेड मी कि यू हैव द पोटेंशियल, सो यू शुड गो फॉर इट। एंड जहाँ तक बात है न्यूयॉर्क छोड़ के आने की, आई थिंक those 4 years were very crucial for me and they have made me into what I am today. But still India is home for me. तो कोई long term में तो वहाँ सेटल होने का प्लान नहीं था। तो मतलब मुझे पर्सनली वो इतना बड़ा कोई सैक्रिफाइस नहीं लगा कि आई लेफ्ट अ सिटी टू कम बैक होम। राइट, ओके, ग्रेट। सो अनुष्का, सो व्हाट इज़ इट दैट आपको, मतलब किस चीज़ ने प्रेरित किया कि सिविल सेवा, क्या ये आपका बचपन का सपना था? क्या ये आपने while you were doing your graduation and like you said that you were interning with the United Nations Secretariat in New York itself, तो क्या उस समय कुछ आपका इस तरीके का वहाँ पे एक्सपीरियंस था? Perhaps you met some bureaucrats there, perhaps you got some exposure to policy level issues. So कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि नहीं सिविल सेवा ही जो है वो आप करना चाहेंगी? फैमिली में भी कुछ ब्यूरोक्रेट्स है, तो उनकी जर्नी देख के एंड द कंट्रीब्यूशन दे हैव मेड, आई थिंक दैट वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी एंड इवन फॉर माय फैमिली पर्सनली, लाइक माय फादर्स फैमिली एंड मदर्स फैमिली, they are in public sector or government. So I think seeing the contribution they have made, that was also a motivation for me. And जब मैं इंडिया वापस आई, this was not something I was very sure about. So I took my time. I took a good 3-4 months to decide कि
सिविल सर्विसेज परस्यू करनी भी है या नहीं. Right. बट एक बार जब सिलेबस देखा विच वॉज टू माई लाइकिंग एंड समथिंग आई वॉज कंफर्टेबल विद, आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माई जर्नी इन September October 2019. 2019. Yes. Okay, great. So 2019 to 2023, obviously 3.5 years of a Yes. lot of hard work, perseverance and whatnot. Also a lot of moments of successes and failures. और अभी हाल ही में हमने देखा कि प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम 2023 हुआ है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था. सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप बताइए कि जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि सोच रहे होंगे कि उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और वो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, एंड कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद इस डिलेमा में होंगे कि अब क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले उनके लिए कुछ एडवाइस आप बताइए, क्योंकि आई एम श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर struggling with the fact whether they'd be able to clear the prelims or not, whether they'd be able to write the main exam this year or not. So if there is some advice you can give to such candidates, and generally what should be the strategy like in the next 2 or 3 months before the mains exam come? So I think this paper was very difficult, and as the common message is that the elimination techniques have been eliminated. So I think now the focus has to be on knowledge. आप जितना भी पढ़ सकते हैं जितनी सोर्सेज से, और स्पेशली उन टॉपिक्स के लिए जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट. आई थिंक दैट शुड बी द फोकस एरिया गोइंग अहेड. And coming from a personal point of view, I was never one of those who was comfortable with prelims. मैंने 3 prelims दी और हमेशा यही डाउट रहता था कि इस बार क्लियर होगा नहीं होगा. बट आई थिंक dealing with that anxiety and focusing on preparation for mains is very important, because these 3 months are very crucial for your score. आई मीन आपका जो आगे भी इंटरव्यू स्कोर होगा और मेंस का स्कोर मिलके जो फाइनल स्कोर होता है, अगर उसमें मेंस का स्कोर कहीं भी कम रह गया तो ये 15-20 डेज का रिग्रेट हमेशा रह जाएगा. तो आई फील प्रीलिम्स हो चुका है, and I know it is easier said than done, but I think it is time to move on and start the preparation of mains, because अगर आपको ये opportunity इस साल mains लिखने की मिलने वाली है तो I think एक भी दिन waste नहीं करा जा सकता. So my advice would be to just keep on working and have a clear strategy of how the preparation has to be. Okay, great. So like you said, 3.5 साल का ये सफ़र आपके लिए रहा, तो मतलब पहला अटेम्प्ट शायद आपने 2020 में Yes, if I can gather correctly 2020 में दिया होगा. एंड आपने ये भी बताया जब हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ नंबर से आप पहले अटेम्प्ट में अपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आप नहीं क्लियर कर पाई, तो उसके बाद ऑफ कोर्स द नेक्स्ट अटेम्प्ट यू मेड इट टू द इंटरव्यू स्टेज, एंड फाइनली टुडे यू आर हियर इन द टॉप 20 रैंकर्स. तो पहले अटेम्प्ट में अनुष्का ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको लगता है कि आप बेटर कर सकती थी? अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा हमें विस्तार पूर्वक बताएं कि प्रीलिम एग्ज़ाम में एग्जैक्टली आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, ताकि वो हमारे व्यूअर्स को, हमारे कैंडिडेट्स को हेल्प कर सके. सो जो मेरा पहला प्रीलिम्स था, जो मेन एक गलती थी, आई अटेम्प्टेड वेरी लेस क्वेश्चंस इन द पेपर 1, एंड आई अटेम्प्टेड ओनली 73 क्वेश्चंस, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप भी हो गए थे. तो आई मिस द कट ऑफ बाय 8 मार्क्स इन माई फर्स्ट प्रीलिम्स. तो आई थिंक मेन मिस्टेक थी कि मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे पेपर में, एंड द रीज़न वॉज दैट कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अटेम्प्ट करूँगी तो वो सही होंगे. तो उसके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई डिड अ लॉट ऑफ रिविजन्स ऑफ द मॉक टेस्ट आई गेव एज वेल एज कॉन्सेप्ट्स. तो आई यूज्ड टू हैव एवरी डे सर्टेन आवर्स डेडिकेटेड टू रिविजन ऑफ व्हाट हैड बीन रेड द प्रीवियस डे. तो मेरा रिविजन से ही दिन शुरुआत होती थी, एंड उसके बाद ही मैं कुछ नया पढ़ती थी. तो जो मेरा 2021 का अटेम्प्ट था, विच वॉज ऑल्सो अ रिलेटिवली डिफिकल्ट पेपर, आई थिंक उसमें वो कॉन्फिडेंस था टू मेक दी अटेम्प्ट्स इन द पेपर, एंड आई थिंक आई अटेम्प्टेड 85 to 89 questions, and that was the reason I made it in that prelims and the next prelims. So prelims की strategy मैं यही कहूँगी, have a list of sources. I used to rely on static books such as Lakshmikant, Spectrum, NCRTs, and for my current affairs I used to rely on Vision IS, PT 365, and I used to focus on revising them regularly, just so अगर इन topics में से कोई भी question आता
तो मैं उसको क्लियरली अटेम्प्ट कर पाती थी. एंड आई ऑल्सो फोकस्ड ऑन अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट. मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के कंपैरिजन में लेस मॉक टेस्ट दिए. फॉर माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई गेव 50 मॉक टेस्ट, पर मैंने एक भी टेस्ट रिवाइज नहीं करा था. दिस टाइम आई गेव अराउंड 35 मॉक टेस्ट, बट आई रिवाइज दोज मॉक टेस्ट 2-3 times. So I think that made the difference of giving me the confidence to attempt more in the prelims paper, which I think is very dicey in general, because 2 hours will help you decide if you get the opportunity to write mains, and also if you will have to take a break of 1 year. So I feel like revision and confidence is something which is needed for prelims, because luck is something which is not in our hand, but hard work and confidence is. Right. So basically attempting more and more questions, but supplementing that with adequate revision and practice. तो इसमें आपने कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाए, जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने एक हमें बताई है कि टेस्ट्स देने भर से सिर्फ कुछ नहीं होता है. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग दोज टेस्ट्स एज वेल, एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप गोइंग बैक टू द सॉल्यूशंस, परहैप्स टेक डाउन सम न्यू फैक्ट्स दैट यू कम टू नो ओवर देयर. तो शॉर्ट नोट्स आपने इसमें बनाए, कुछ उसके बारे में बताइए. सम स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, से फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर एक टॉपिक है जो काफ़ी उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत होती है, काफ़ी नॉलेज उसमें हमें बिल्ड करनी पड़ती है. तो उसकी अगर आप कुछ टिप्स दें कैंडिडेट्स को. कुछ बुक्स हैं जो ऑलरेडी नोट्स फॉर्मेट में हैं, जैसे लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, तो उनके मैंने नोट्स स्पेसिफिकली नहीं बनाए. I made notes for ancient and medieval history from NCRTs, old NCRTs. And for geography also I made notes from 11th and 12th NCRTs, which are 4 books, and GC Leong, as well as any online notes. And environment के लिए भी मैंने specially notes बनाए थे. तो जो books already concise थी उनसे ही मैं revision करती थी, because I used to underline, and through constant revisions I knew what I was missing and what were some facts that I needed constant revision of. बट बाकी मैंने जो नोट्स बनाए थे, मैं एक बार नोट्स बना लेती थी तो फिर बुक्स नहीं खोलती थी. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. बट आई थिंक हैविंग कंसाइज नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. पर आर्ट एंड कल्चर का भी आई थिंक 11th NCRT इज वेरी यूजफुल. सो आई यूज्ड टू रेफर टू दैट. आई हैड हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एंड इट हैज अ लॉट ऑफ पिक्चर्स एंड डायग्राम्स ऑल्सो. So that also helps in it. So I think you have to make a wise decision about कहाँ पे notes बनाने और कहाँ पे नहीं. And based on that, I used to revise. Similarly, we have seen that subjects like climate, environment, geography, ये भी बहुत important है. इसमें भी कुछ हमें बताइए कि कोई ऐसे sources, newspapers या कोई magazines जो आपने पढ़ी हो, या कोई ऐसी websites जो आपने follow की हो, या कोई ऐसे social media handles जो आपने फॉलो की हो, जिससे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रही हो, एंड दैट विल कम यूजफुल टू आवर कैंडिडेट्स एज वेल. सो डेली बेसिस पे तो मैं हिंदू ही पढ़ती थी, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू सी द वीडियोस ऑफ एनालिसिस जो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के आते हैं यूट्यूब पे. पर वो मैं डेली बेसिस पे नहीं कर पाती थी. सो एक्चुअली फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस करंट अफेयर्स आई यूज्ड टू रिलाई एंटायरली ऑन PT 365 and Mains 365, because they have already done the work for you. They have made the notes. तो मैं उनको ही use करती थी. Obviously, I used to highlight the important parts or something which I would forget. But I think note making current affairs में मेरी limited ही थी. All right. Okay. Coming to CSAT, I was just looking at some of the social media posts the other day, and I realized that CSAT भी शायद बहुत difficult आया है इस बार. तो CSAT के लिए आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया, और क्या पेपर आई एम श्योर आपने हो सकता है देखा हो इस साल का, तो बताइए कि क्या, और कैंडिडेट्स को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उनका CSAT भी, बिकॉज बहुत बच्चे CSAT से डरते भी हैं कि उनको लगता है कि CSAT बहुत डिफ़िकल्ट है, कैट लेवल का एग्ज़ाम है या क्या है. तो आप ये बताइए कि क्या करना चाहिए बच्चों को CSAT की प्रिपरेशन में. So CSAT was something I was also not very comfortable with, because it has a lot of maths portion also. So मैं पिछले 5-6 साल के CSAT के UPSC के पेपर्स उठाती थी और उन्हें टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करती थी, एंड आई यूज्ड टू सी माई स्कोर. तो यूजुअली आई यूज्ड टू बी इन द सेफ रेंज ऑफ 90 to 100. तो आई यूज्ड टू रिलाई ऑन ओनली दोज प्रीवियस ईयर पेपर्स. पर अगर किसी को लगता है कि उन्हें वो कंफर्ट नहीं है CSAT में, then they can take mock test for CSAT also.
And another thing I did was English. I was usually very comfortable with, and I used to check the official UPSC key for that. Okay. पर मैथ्स के क्वेश्चंस में जहाँ पे मेरे को समझ ही नहीं आता था कि ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करने हैं, मैं ऑनलाइन वो क्वेश्चन टाइप करती थी और जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स के एनालिसिस आते थे, जैसे विजन का आता है, बाकी इंस्टीट्यूट्स के भी आते हैं, आई यूज टू रीड दोज एनालिसिस and see if I can learn the formulas or strategy in which maths can also be done. So my strategy in the CSAT paper was usually I used to dedicate 1 hour 20 minutes almost to the maths questions and the last 40 minutes to English because I was comfortable with English. तो वो मेरे easily attempt हो जाते थे. पर जो difficult part maths का लगता था मेरे को, वो मैं पहले के 1 hour 20 minutes रखती थी ताकि जितना तब अटेम्प्ट कर सकूँ वो हो जाए. बट आई थिंक practice is something which will help in CSAT and also taking help wherever needed. अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम लग रही है तो आप NCERTs से कॉन्सेप्ट्स थोड़ा पढ़ सकते हैं, जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा. सो आई थिंक गेटिंग हेल्प फॉर व्हाटएवर इज योर वीक एरिया एंड प्लेइंग योर on your strengths in the examination is key for CSAT. And any books that you would recommend for practice, any test series, any websites that came in handy to you in particular for CSAT? So I used to see the previous year solutions only. And कोई book तो मैंने ली नहीं थी. I just had previous year 10 years के जो papers के solutions थे वो रखती थी मैं अपने पास. और जो भी issue आता था मैं उससे देख लेती थी. And I think websites तो there are many and you can refer to various of them for solutions. Many options. Many options, yes. So I'm sure right now students are preparing for main examination. तो आप भी इस दौर से गुजरी हैं कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, you battled the uncertainty and then quickly you started preparing for the main exam. अभी क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? हमें स्टेप बाय स्टेप बताइए कि सबसे पहले अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की आप हमें बात बताइए कि what motivated you to choose economics as your optional paper? What are the different things you did particularly because जहाँ तक हमें समझ आया है आप शायद one of the toppers भी हैं economics optional में. We'd like to tell our viewers that Anoushka actually scored 276, which is a very very high score in the economics optional paper. तो इस समय मेंस के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते समय ऑप्शनल पेपर को कितना समय देना चाहिए, जनरल स्टडीज़ को कितना समय देना चाहिए, एस्से की प्रैक्टिस, हमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताइए. So first I would focus on the optional. So I think optional was the main key which made the difference in my first mains and this mains. And I improved my score by almost 50 marks. Wow. And the difference was mainly because of conceptual clarity. जब मैं पहले अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिखा, मैं एग्जाम से एक महीने पहले तक अपने नोट्स बना रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड आई फील इवन इन द एग्जामिनेशन द क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड वर नॉट बेस्ड ऑन माय स्ट्रेंथ एंड दैट वाज अ की फैक्टर इन मी गेटिंग लाइक लेस मार्क्स इन इकोनॉमिक्स. So this time what I did was, and that is true for GS also, I started focusing on making notes and having the conceptual clarity in all the subjects which are important for mains. Like geography has been a weak point for me. So I tried to read various sources for geography and worked on the basis of previous year questions कि क्या questions पूछे जाते हैं. तो उसके हिसाब से मैंने अपने notes बनाए. And I tried कि जब तक prelims का result आया, which is like almost 17-20 days after the examination, तब तक मेरा focus note making पे ही था. तो मैं अपने notes को compile करने की कोशिश कर रही थी and I tried to finish my economics and GS notes by that time. And उसके बाद I focused on the test series. So test series is very important because you can have a plethora of knowledge, but if you're not able to present it in a time-bound manner for the examiner, then it can go to waste. So this time there were small differences. I had well-labeled diagrams. I was better in presentation. I was underlining the keywords. I had short paragraphs in my optional, and I was boxing the headings, etc. And I think these small things with greater conceptual clarity helped me in getting a better score in mains this time, especially for economics. So economics का मैं यही कहूँगी कि have your notes filled with statistics, data, economist names, even diagrams, etc. And for the previous year questions, it is very important you have an idea about the last 10 years and क्या
टॉपिक्स रिपीट होते हैं क्योंकि ऑप्शनल में रेपिटेशन बहुत कॉमन है. So having ready answers for those questions is also key because even for this paper there was repetition of various topics. तो वो आंसर्स करने में मतलब बहुत एक ईजीनेस रहती है अगर आपके पहले से आपको आइडिया है. तो आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसाइज नोट्स एंड प्रैक्टिस इज समथिंग व्हिच हेल्प मी with my optional in this time. Right. And do you think reading the economic survey or going through the budgets, that also came in very handy for the economics optional? Yes, so actually paper 1 is technical, so Right. for that we focus on the static part. Right. But paper 2 is It's Indian all economy dynamic. and it is very dynamic. So for that I read the eco survey, I read the Nice. budget, and I also read the mains 365 of the last 2 years. Right. Just so I had an idea about what can be done. Because in the optional the questions are mostly based on depth as well as breadth. Sure. So the current affairs can provide you with those key points which is needed for those answers. So I think for paper 2 the focus was on current affairs and revising the eco survey, budget for schemes, Right. etc. very Right. frequently. Right. So I think they play a very important role. Sure. So scoring such a high, I mean, obviously the marks are very, very impressive in your optional paper. और हम ये एक सेइंग सुनते हुए बड़े हुए हैं कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा. तो आप ये बताइए कि व्हाट इज इट दैट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट यू पुट इन, या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपका स्कोर, यू वर टेलिंग अस दैट आपका बहुत स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन योर मार्क्स इन द लास्ट अटेम्प्ट विज़-अ-वी दिस अटेम्प्ट. तो क्या आपने वो एक ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीज़ थी, क्या एक एक्स्ट्रा वो कोई भी फाइनर एस्पेक्ट्स जो आपके परफॉर्मेंस में रहे होंगे जिससे आपका इतना अच्छा स्कोर आया? इट कुड बी डायग्रामेटिक presentations, it could be like you said, you were boxing the headings, you were making writing the facts etc quite neatly. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके कि अपने आंसर्स को और परफेक्टली वो प्रेजेंट कैसे कर सके. So I think this time जो एक difference ये भी था, last time I remember prelims was in October and mains was in January, so this time we had more time in general. Okay. And I think having the benefit of ready notes made me plunge into practicing mock tests very soon. So therefore there was consistent and regular test series. Right. I used to give almost one mock every week and I used to get the feedback and I used to incorporate that feedback in my next mock that I gave. So I think having that consistent effort as well as just giving it your all is something I did in this mains. Right. I did not leave any stone unturned. I just wanted my answers to be as best as I could make them. So I think putting that extra effort is important because, and it can be small things. It can be writing a better, more detailed answer, having better diagrams, etc. So I think consistent effort is something which helped me in making those improvements which is required for mains. Okay, great. So obviously great words of wisdom there. बात करते हैं जनरल स्टडीज़ की. जनरल स्टडीज़ में 3 पेपर्स हैं. There is ethics as well and of course there is essay paper also. तो थोड़ा सा पहले हमें एथिक्स का एक पेपर है जिसमें अगेन लाइक यू सेड अबाउट योर पेपर 2 इन इकोनॉमिक्स डायनामिक होता है. सिमिलरली एथिक्स का ऑफ कोर्स देयर इज अ स्टैटिक पार्ट एंड देन देयर इज दिस डायनामिक पार्ट जिसमें बहुत तरीके की स्किल्स चेक की जाती हैं. थोड़ा एथिक्स के ऊपर हमें बताइए कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या स्ट्रैटेजी थी और क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए टू इम्प्रूव द स्कोर इन एथिक्स इन पर्टिकुलर. So ethics में जो मेरी strategy थी, I focused on concise notes again. मैंने DK बालाजी सर की बुक पढ़ी थी ethics की and that gave me the idea about क्या definitions होनी चाहिए, क्या examples use करने चाहिए. And then I made online notes. So what the strategy was, every keyword that was mentioned in the syllabus, उस पे I had the definition, certain quotes and certain examples of case studies if possible. Right. And also if how it can be inculcated in people in general. Correct. So and this was based on the previous year questions. जो पहले questions आते थे उसमें definitions पूछ लेते थे and ये तक पूछा है how it is important for you. तो उस लाइन पे मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर करे थे विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, कोट्स, डेफिनेशन एक्सेट्रा. एंड आई थिंक दैट हेल्प मी इन एथिक्स बिकॉज द फर्स्ट पार्ट इज स्टैटिक. जो पार्ट ए होता है इन दैट यू हैव डेफिनेशन एंड क्वेश्चन
answer format, and the part 2 is case studies. Right. So part 1 mein, if you have your definitions ready or some quotes, you have your introduction and conclusion Ready. already ready, Mm-hmm. and then you can address whatever is asked in the question as the Yes. body part. Absolutely. But I think so that helped me in attempting those questions better. And even for the case study questions, if we have our values that we want to highlight already ready, stakeholder diagram, Correct. something like that, as well as going a step ahead and also answering what is not asked in the question. So this time in ethics, in 2-3 of the case studies out of 6, what I did was that they usually ask us कि कोई option choose करो which is best in the given scenario, but every option has some pro and con. So this time I went a step ahead and said कि अगर ये option choose कर रहे हैं तो इसके जो cons हैं इसको भी हम इस तरीके से हटा Address कर सकते हैं. सकते हैं. And I think Wow. that also helped me in scoring much better in case studies this time. So I think having those notes and practicing again is very important, because case studies are very scoring part. And if you have your strategy already ready, जैसे I knew I had to draw the stakeholder diagram, I had to highlight the values, as well as I had a clear approach about how I would write the answer. Right. Like usually वो पूछते हैं ethical dilemmas क्या है. So I used to have stakeholder wise approach कि Right. stakeholder A के जो dilemmas है पहले उनको mention करो, फिर stakeholder B पे जाके करो. So it was not very random, but it was, I think, in a more organized manner. So I think that was something I focused on this time. So I think it goes back to presentation, Right. having point formats or hub and spoke diagrams, etc., as well as having those ready notes and definitions. Just so if I read a word such as honesty or probity, etc., I already had an introduction and conclusion in my mind. Right. So I think notes is something I would highlight, a very crucial for mains examination. Wow. So basically, it's a very interesting tip that you've given for the benefit of the candidates कि भाई एक सेट सिलेबस है, उसमें एक सेट टर्म्स हैं. Yes. तो कम से कम हम उसकी तो एक मतलब एक रेडी रेकनर टाइप का हम बना लें कि एक ऑनेस्टी हो गई, इंटेग्रिटी हो गई, और जो क्वालिटीज़ हैं सिविल सर्वेंट्स की, और जो एथिक्स का जो सिलेबस है उसमें जो कीवर्ड्स हैं उसमें हम कोटेशंस रेडी रख लें, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन थोड़ा कंटेम्प्रेरी बना के उनके नोट्स बना लें, ताकि बाय द टाइम एग्ज़ाम आता है, और उसको ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली रिवाइज करें, ताकि बाय द टाइम एग्ज़ाम आ जाए तो हम अपने हिसाब से वहाँ पे आंसर्स को थोड़ा बहुत ट्वीक करें. और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि इससे टाइम भी जो है आपका काफ़ी बच जाएगा व्हाइल यू आर टेकिंग द एग्ज़ाम. तो आप और क्रिएटिव होने का आपको वहाँ पे मौका मिल सकता है. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, तो GS 1, 2, 3 की अगर हम अब बात करें तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर का उसमें प्रोमिनेंट रोल है, इन एडिशन टू द स्टैटिक रीडिंग्स दैट आर देयर. थोड़ा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में हमें बताइए कि किस तरह से आप न्यूज़पेपर और जो स्टैटिक जो सिलेबस है उसको कैसे कंबाइन करती थी. अगेन आपने उसमें नोट्स अपने बनाए, कुछ ऐसे रेडी रेकनर्स आपने तैयार किए जो कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप रिवाइज़ करें, क्योंकि शायद बहुत कम ड्यूरेशन का टाइम होता है एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में. थोड़ा उसके बारे में भी हमें डिटेल में बताएं. So GS 1, 2 and 3 के लिए भी almost same strategy थी. I took the syllabus and जो भी keywords थे मैंने उस पे अपने notes बनाए थे, and notes with data, definition, analysis, pros and cons, and a futuristic way forward. And this was based on previous year questions क्योंकि mains में repetition बहुत common है topics का. So I had an idea about what questions UPSC was asking and what was something they wanted from them. So मेरे notes उसी तरीके से बने हुए थे. तो जो मेरे static notes थे वो तो physical form में थे, but I used to maintain my online notes on Evernote, and I used to add any dynamic fact that I found or anything interesting in some editorial. जैसे हर रोज़ हिंदू पेपर पढ़ते थे तो कुछ opinion अगर आ गया है तो I used to note it down, because mains is more about opinions, and not only yours but others also. Somebody who has a authority or somebody who has experience in that. So for that I used to maintain online notes, and that was for the dynamic part. तो मैं उसके भी revisions करती रहती थी, because I feel writing a good answer in mains is difficult when you have to write that answer in only 7 to 10 minutes. If given 20 to 25 minutes, anybody can write a good answer. So I feel if you have that revision and you have that knowledge on your tips, then that can help you in giving more time to the questions which might be new for you in the examination, while giving a very good answer for
the questions you are aware of. Right. So GS 1 2 3 के लिए भी यही था, notes मेरे तैयार रहते थे, and I used to use mains 365 again for any dynamic current affairs of the last 1 year, and उसे मैं अपने notes में add कर लेती थी, and फिर mock test के through I used to practice them, and mock test में जो answer writing I never did daily basis पे answer writing. I used to attempt mock test because I was comfortable with presentation in general, because I've always written in point formats, etc. So I used to plunge directly into mock test and not daily answer writing. तो mock test में मैं जो मेरा main attempt रहता था वो time limit को कम करना होता था. For the first mains mock test I ever wrote, I took more than 4 hours, because you don't understand how much time is needed for 10 markers and 15 markers. So mains का वो जो 3 महीने का gap होता है prelims और mains के बीच में, उसमें मेरी यही अटेम्प्ट रहता था कि वो टाइम को कम करूं, एंड दैट डिड नॉट कम डाउन सडनली. इट वेंट फ्रॉम 410 to 345 to 330 to 315, and finally in the last 2-3 mocks it went to exact 3 hours. So I feel like practice is again very important, and presentation is also something I focused on in mains examination, because I feel like for you it is years of hard work which is put into your mains examination, but for the examiner it's just another copy they have to check within 20 to 25 minutes, and they will just move on. So if you can make it better experience for them in terms of writing in a clear handwriting or points format, or even using a lot of diagrams, I think that can make it better for you in terms of marks and also for the examiner. So I think putting yourself in that perspective was something I did. So I used to again like box the headers, underline the keywords, mention key facts or statistics, mention recommendations of committees in the conclusion part, as well as highlight them, just so all the important keywords where I wanted the attention to be attracted were seen by the examiner. So I think focusing on the knowledge and presentation was also something which is very crucial for the mains examination. तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर हम जब करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमें आते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं आते, या कुछ क्वेश्चंस हमें लगता है कि ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं. तो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग द एग्जाम? जो क्वेश्चंस आपको आते होते थे आप सबसे पहले वो करती थी, या आप मतलब कैसे 3 आवर्स को डिवाइड करती थी आप कि फर्स्ट 1 आवर में या फर्स्ट हाफ एन आवर में आप ये करेंगे? मतलब सब बच्चों की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है ऑफ कोर्स, लेकिन आपके एक्सपीरियंस से अगर हम कुछ सीख सकें तो इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइए. So for 10 markers you need to write almost 2 pages, and for 15 markers 3 pages. So I used to have that psychological thing that I used to attempt the first 5-10 markers, and then I used to transition directly to the 15 markers. तो जो last 1 hour होता था उसमें मेरे 2-3 15 मार्कर्स रह जाते थे और बाकी 5-10 मार्कर्स रहते थे, बट एक मन में रहता था अरे 2 पेजेस ही लिखने हैं तो इतनी टेंशन नहीं है. सो आई थिंक दैट वाज माय स्ट्रैटेजी, एंड I also feel like the examiner will go in sequence. So if your first 5 questions are written in a good manner, then that also helps form a positive perception about your paper. And 15 markers are also crucial for fetching marks for you. So I used to attempt the 5 questions first, and then go to like 15 markers, and then come back to the 10 markers like the last 5. So that was my strategy of attempting the paper in general. And I think I mean for all GS papers this was not something I knew from the first day. This was something I did based on my own analysis and key strengths. But I think it varies for people. So whatever works for them, you just have to see that even for questions you're not comfortable with, you have to attempt those questions. Because if you think you will write some very good answers, that will also not fetch you very high marks. So a better strategy is to attempt all the questions. And for the questions you are not comfortable with, which are there in the examination also, I think picking up a keyword from the question and writing some generic things about it can also fetch you 1 or 2 marks, which is I think which can make all the difference in mains examination. So my strategy was attempting all the questions and giving more time to the questions in which I had an idea. And for the questions where I did not have an idea, I used to write some generic points with the introduction, conclusion, just so the examiner got an idea that I had less knowledge about it, but still I tried to attempt it to the best of my ability. Okay, great. And
व्हाट अबाउट द एस्से सेक्शन, कैसे प्रैक्टिस किया आपने, कितने एस्सेस तकरीबन आपने प्रैक्टिस किए होंगे इस टाइम स्पैन में, बिकॉज आई बिलीव एस्से कैन ऑल्सो इंक्रीज, आई मीन इट प्लेज अ बिग रोल इन डिटर्मिनिंग योर रिजल्ट. तो थोड़ा सा एस्से के बारे में ज़रूर हमें बताइए, स्पेशली जब हम देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आजकल आते हैं, तो वो आई थिंक डेफिनेटली आपकी टिप्स हमारे कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी. So, for the essay, I feel like in general there is a trend that increasingly there are philosophical essays Right. in the paper, Hmm. and I'm very comfortable with them. So I Okay. used to usually go for those essays. Hmm. And मेरी स्ट्रैटेजी एग्जाम में यही रहती थी कि दोनों एसेज को इक्वल टाइम दूं, तो Right. 1.5 आवर्स ईच रहता था. Right. और उसमें जो पहले के 15 मिनट्स थे दैट वाज डेडिकेटेड टू ब्रेनस्टॉर्मिंग. Right. तो उसमें मैं सोचती थी मैं इंट्रोडक्शन में क्या एनेक्डोट कुछ लिखूं, क्या स्टोरी लिखूं, या Right. मतलब कोई कोट अगर यूज कर सकती थी तो वो आई यूज टू राइट. एंड आई यूज टू फोकस ऑन 5-6 डायमेंशंस इन Right. एवरी एसे. एंड जो मेरा कंक्लूजन होता था वो फ्यूचरिस्टिक होता था. सो दैट यूज टू बी ऑन वेरियस लेवल, सच एज इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी लेवल पे क्या हो सकता है, सोसाइटी, नेशनल, इंटरनेशनल, उस लेवल पे आई यूज टू राइट माई कंक्लूजन. Right. तो उस सब में जो लिखना होता था, जैसे सम फ्यूचर स्ट्रैटेजीज, सम गुड केस स्टडीज दैट कैन बी अडॉप्टेड, वो सब मैं पहले से ही सोच लेती थी कि इस ऐसे में क्या डेटा लिखना है, क्या केस स्टडीज मेंशन करनी है. एंड आफ्टर दैट 15 to 20 minutes of brainstorming, I used to start writing the essay. Right. And I had a clear demarcation कि इक्वल टाइम ही डिवोट करना है. और जो सेकंड ऐसे का ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी वो मैं फर्स्ट ऐसे लिखने के बाद ही करती थी. Correct. क्योंकि देयर यूज्ड टू बी दैट फीलिंग कि एक ऐसे हो गया, अब यू कैन डिवोट योर फ्रेश एनर्जी टू दिस वन, एंड इट गिव्स यू अ ब्रेक फ्रॉम राइटिंग ऑल्सो. सो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी. एंड जहाँ तक क्वेश्चन आता है कि कौन से एसेज ऑप्ट करो पेपर में, आई फील लाइक वट एवर यू फील कंफर्टेबल विथ, इट्स बेटर टू नॉट गो विद एनी ट्रेंड. बिकॉज अगर आप अपनी स्ट्रेंथ उसमें शोकेस नहीं कर पाएंगे तो वो आपके मार्क्स इम्पैक्ट हो जाएंगे. करेक्ट. एंड ऐसे के लिए एज सच मैंने कोई सेपरेट प्रिपरेशन नहीं करी. आई रिलाइड ऑन माई सोर्सेज ऑफ जीएस. जो एथिक्स की केस स्टडीज कोट्स होते थे उनको मैं बहुत एक्सटेंसिवली यूज करती थी. एंड आई ऑल्सो हैव अ हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स. तो अगर उसमें आई यूज टू कम अक्रॉस एनी इंटरेस्टिंग थिंग, आई यूज टू ट्राई टू फॉर्मुलेट अ स्टोरी आउट ऑफ इट, जस्ट सो वो इंट्रोडक्शन बन पाए मेरा. So that was the case in general, but उसके लिए कोई separate preparation नहीं थी. Right. I used to give mock test, and even when I was not in this cycle, especially after not clearing my first prelims, I used to focus on writing at least one essay every 15 days. Okay. So Wow. essay was something I was very comfortable with. Right. Like एक flow रहता था मेरे essay में, and I knew what I had to write. So that was there. And what benefit I got was in that 1 year I wrote essays on various topics. Right. Science and tech, economy, development. तो एक different topics के मेरे already लिखा हुआ था ऐसे में कि अगर आएंगे तो what examples I can use, what anecdotes can be used, etc. But in general आजकल philosophical topics पे थोड़ा focus रहता है. Right. तो I used to go for those essays, and I think they give you a lot of scope to express your creativity, etc. So ऐसे के लिए यही रहती थी, but कुछ separate strategy नहीं थी. Just practice through mocks and just taking previous year questions, and also getting them read by people who are not preparing for UPSC. Correct. Because I think you get very more important perspective about the flow, etc. Because if somebody is preparing about for UPSC, they have an idea about the data, case studies, etc. So for them it might not be so abstract. Right. But for anybody who's not preparing, getting their feedback is important, just so you know that your essay has a flow and everybody can understand that. So that was my strategy in general. Okay. So in essay, for example, on the day of the exam, question paper आया तो आपने थोड़ा बहुत एक पहले, did you spend some time making a structure of the essay, rough work, थोड़ा brainstorming internally कि क्या लिखना है, how to go about it. Also हम ये देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जितने सारे एस्पेक्ट्स आप एक एस्से के अंदर ला सकें या आंसर्स को जितना आप इंटीग्रेटिव बना सकें, वो बहुत बेनिफिशियल रहता है. क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट, आई थिंक द एग्जाम इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेस्ट कि आप कितने डिमेंशंस के साथ सोच सकते हैं एक पर्टिकुलर इशू को लेके. तो उसके बारे में थोड़ा बताइए. ऑन द डे ऑफ द एस्से टेस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप जब भी मॉक एग्जाम देती थी एस्से का, so would you spend the first 10 minutes just in making the structure of the essay, consolidating your thoughts,
और कोटेशंस या इंट्रोडक्शन इन पर्टिकुलर और कंक्लूजन, ये कितने जरूरी होते हैं एक अच्छे रोबस्ट एसे के लिए? So, structuring तो I think वही रहती है, introduction, body, conclusion, but that brainstorming is very necessary, Right. just so you have an idea about the direction you want to take your essay in. तो उसकी वजह से मैं इंट्रोडक्शन सोच लेती थी और कंक्लूजन में भी क्या क्या फैक्ट्स मेंशन करने हैं, कोई रोल मॉडल्स है वो मेंशन करने, तो आई यूज्ड टू थिंक जस्ट सो एक थोड़ा फ्लो बना रहे ऐसे का. एंड समथिंग आई डिड वाज आफ्टर राइटिंग अबाउट वन एस्पेक्ट इन द essay, आई यूज्ड टू रीड दोस पैराग्राफ्स अगेन एंड ऑल्सो सी अगर वो एक फ्लो बन पा रहा है, तो उसकी वजह से आई यूज्ड टू नॉट गेट डाइवर्टेड इन एनी डायरेक्शन. तो एक थोड़ा डायरेक्शन रहती थी ऐसे की. But I think dimensions जितने cover हो, that is a very good and crucial part for the essay, because they don't want you writing 6 paragraphs on the same dimension. You would rather go for 3 different dimensions and 2 paragraphs each. And that was something I did. I used to focus on 1 to 2 paragraphs for every dimension. But I think you also have to see that आपकी ब्रेथ के चक्कर में डेप्थ ना कॉम्प्रोमाइज हो जाए. सो इसलिए आई यूज्ड टू फोकस ऑन 5-6 डायमेंशंस फॉर एनी essay, not more than that, because you have a lot of potential to go in any direction. But I think just picking the topics, seeing your comfort areas, and then brainstorming is something that helped me. And I used to go in a normal flow based on the structure I had. And if any change was also required in terms of, if I came across a new example, I used to make those dynamic changes also. So I was not very rigid when attempting the paper. Okay, alright. So great. So एक जो मेरे बार बार दिमाग में बात आ रही है वो ये कि इस साल जब रिजल्ट आया आपका, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर जब रिजल्ट आया था, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने इंटरव्यू दिया, अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि सेकेंड अटेम्प्ट में आप इंटरव्यू तक चली गई. एंड वो रिएक्शन और इस बार का जो रिएक्शन है उसका थोड़ा सा हमें जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट दैट, कि उस समय, क्योंकि आई एम श्योर इट प्लेज इन योर माइंड रिपीटेडली कि एक ऐसा भी टाइम था जब इतनी दूर तक पहुंचे लेकिन रिजल्ट जो है वो फेवर में नहीं रहा, और आज एक ऐसा टाइम है जब इतना अच्छा रिजल्ट है. तो इससे आप श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेरणा भी मिलेगी हाउ टू कीप गोइंग एंड हाउ टू कीप इट, बिकॉज इस बार भी ऐसे कई बच्चे होंगे आई एम श्योर जिनका इंटरव्यू तक नाम आया होगा लेकिन वो फाइनल लिस्ट में नहीं है. तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट एक्सपीरियंस एंड हाउ टू कीप एट इट एंड हाउ टू कीप लुकिंग फॉरवर्ड. So both the times I feel like I never check my result, so it is usually my father who checks the result for me. But I think both the times it was somebody else who communicated the result. And in 2021, when I did not make it, I read the message that somebody had written that don't lose hope, you have another attempt, and that was the time I found out I had not made it. So I think there was shock in general, and also there's a lot of sadness because you have come this far. So there's a feeling कि अब तो हो ही जाएगा, इंटरव्यू भी दे ही दिया है. But I think it also makes you grounded and humble, because you realize कि everything will not work in your favor. So I think not getting success in that second attempt was something which made me more humble and grounded, and also made me focus more on hard work. So I feel for this attempt I had given it my all. Like I remember telling people just before the result came that this time I have no regrets on my part. मैं जितना कर सकती थी मैंने वो करा. So this time also a friend of mine told me congratulations, you have made it, and I called her up to ask my rank and everything. So I think there was immense gratitude. I think for a second or two I was not able to believe also that I've got such a good rank. But I think after it started sinking in, there was just immense gratitude. But I feel like having been on both the sides of not seeing my name on the final list and also seeing it, I think this process is based on a lot of uncertainty, and people who reach the interview stage, there is an element of luck as well as a little difference in your approach. But I feel like you are capable enough because you have reached the interview stage, and not to get disheartened and rather learn from your mistakes and keep moving ahead is something which is crucial. Because after like the second attempt result, I was also very demotivated. But my parents and my friends, they played a key role in motivating me to give this attempt. And I think without them maybe I would not have even given this attempt. So they are the reason that
I stayed motivated in this process. So having a strong support system is very important. और आपने एग्जाम जब देने की ठानी तो 2019 में आपने एग्जाम दिया और एकदम से आई थिंक 5-6 महीने के अंदर ही कोविड लॉकडाउन आ गए तो एंड यू नो कोविड काफ़ी लोगों को मतलब मेंटली काफ़ी तरीके से कोविड की क्राइसिस में हमने देखा है तो what was your defense mechanism, what was your strategy to combat all the stresses that actually come with this exam and in this journey? क्योंकि कभी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं मॉक टेस्ट में, कभी कभी आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते. द जर्नी इटसेल्फ इतनी ज़्यादा लंबी होती है कि आपको अपने मोटिवेशन लेवल्स बना के रखने पड़ते हैं. थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ज़रूर हमें बताइए. आपकी क्या हॉबीज़ थी, आप क्या करती थी जस्ट टू कीप योर सेल्फ क्रिएटिवली ऑक्यूपाइड, एंड कैसे ब्रेक्स आप लेती थी, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आप क्या करती थी, उस तरह से हमें थोड़ा बताइए. So I think stress is a major part, and the uncertainty creates that stress. And COVID ki time, when everything was so uncertain in terms of like life, health, etc., there was a lot of tension. Absolutely. But I think focusing on the good parts, such as the family that you have and the time that we got for preparation, was something I immersed myself in. So मैं कोशिश करती थी कि अपने आप को थोड़ा positive रखूं. And I feel like in general, मेरे पूरे preparation में, I focused on my hobbies also. So I like to listen to music, I like to dance and read novels. So that was something I kept on doing. And also communicating with my family helped me a lot. Like understanding what they are going through, as well as communicating my fears with them, was something that created that safe ecosystem for me, especially in COVID, that kept me motivated and going ahead. And stress management के लिए मैं यही कहूँगी कि have a balance in your life. This preparation is not your entire life, and you should not make it such. Therefore, I used to study 8 to 10 hours, but I used to focus on my hobbies, exercise also, just to keep myself rejuvenated. And obviously हर रोज तो पढ़ाई नहीं हो पाती है 8 से 10 घंटे. So I used to take breaks, and I used to not have any regrets for those days I could not study. I used to think कि अरे rejuvenation हो गया, चलो now I can give more to this preparation. Correct. So I think keeping a positive attitude is very important. And उसमें I think my parents, my family, my friends, and even my mentors, they helped me immensely by giving me the right direction as well as the motivation which is needed. Okay. Yeah. Okay. So what were your hobbies exactly? Like कौन सी चीज़ें आप पढ़ना पसंद करती थी? Some books that you may have read or any exercises that you may have followed. कुछ भी हमें बताइए थोड़ा डिटेल में, ताकि और भी बच्चे इस तरीके के स्केड्यूल को फॉलो कर सकें. So I usually read fiction. Okay. Because I feel like that provides you like a opportunity to go into some other world in a way, because you are reading about somebody else's experience. So I read novels by Chitra Banerjee, such as Palace of Illusions and the latest one, Independence. So I used to read those novels. And I also read books by Khalid Hosseini, like Kite Runner, A Thousand Splendid Suns. So that made me more empathetic, and also I think grateful for the life that I have. So those were the books I followed. And listening to music is mostly like Bollywood music and latest Hindi bands or any new independent artists. And I used to walk daily with my family. Like Good. 40 minutes was devoted to that. So that helped me with my fitness. And I used to have these online workouts where they used to have songs, and there used to be exercises based on them. So those were some things I did to keep myself rejuvenated. Okay, great. So any time did you think कि this should be my plan B? बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लान बी रखो, ज़रूरी नहीं है कि क्लियर ही होगा एग्ज़ाम. ऑफकोर्स ये मुझे लगता है एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मतलब सोच के ही जाना चाहिए कि क्लियर तो होगा ही, लेकिन ऑफकोर्स इस एग्ज़ाम में बहुत अनसर्टनिटीज़ इन्वॉल्व हैं. तो प्लान बी के बारे में कभी सोचा आपने, या फिर आपका ऐसा कोई द बैक ऑफ योर माइंड डिड यू हैव एनी सच अदर ऑल्टरनेटिव्स इन योर माइंड दैट आप सिविल सेवा नहीं तो चलिए ये कर लेंगी, ऐसा कभी कुछ सोचा आपने? I feel like I did not actively work towards a plan B, but I think हमेशा वो option था. जैसे I've not done my masters, तो था कि अगर ये एग्जाम में सक्सेस नहीं मिलेगा तो I'll just go for my masters and I can even work in the private sector. So वो options हमेशा रहते थे. तो
आई फील प्लान बी की इम्पोर्टेंस उतनी ही होनी चाहिए कि आपका स्ट्रेस वो कम करे, बट इट्स नॉट डाइवर्ट योर एनर्जी फ्रॉम दिस प्रोसेस into making efforts towards plan B. Right. So I think एक back of the mind पे एक वो comfort रहता था कि अगर UPSC नहीं भी होगा तो life में और कुछ कर सकते हैं, and that Correct. is I think true for everyone. Yeah. Because this preparation prepares you not only for UPSC but in general for life in general. And I feel इसलिए plan B यही रहते थे, पर कभी भी actively उसके बारे में सोचा नहीं. Right. यही लगता था कि जब attempts अगर ज़्यादा हो जाएंगे then I'll start thinking about it. Right. ओके, तो अनुष्का इस साल ऐसा भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो विमेन कैंडिडेट्स हैं, सबसे ज़्यादा इसी साल, शायद पिछले 10 साल में या सबसे ज़्यादा विमेन कैंडिडेट्स हैव क्लियर्ड द एग्ज़ाम दिस टाइम. तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि हाउ डू यू फील अबाउट मोर एंड मोर नंबर ऑफ विमेन कैंडिडेट्स फेयरिंग वेल इन दिस एग्जामिनेशन, एंड अपने इंटरव्यू प्रोसेस के भी बारे में हमें थोड़ा सा बताइए. कैसे आपने प्रिपरेशन की और किस तरीके से आपने जो है अपने लास्ट अटेम्प्ट के इंटरव्यू से इस अटेम्प्ट के इंटरव्यू में वो जो परफॉर्मेंस है उसमें आप कैसे डिफरेंस लेके आई, ये भी हमें थोड़ा सा बताइए. So I think it's a very positive thing that more women are joining and getting selected in civil services, because I feel society in general is making progress, but still there are certain gender roles or stereotypes जो women have to face more than men. And I feel like setting these positive examples of having more selection also prepares role models for the future generations कि they can also pursue this and not be scared of the challenges that might come in the Right. process. And I feel it also creates a safety infrastructure for them, because they know that if you have the correct ecosystem or the correct mechanism or tools, then you can also succeed in this examination. Right. So I think that is something which will set a very positive example for the coming years. So focusing on the interview process, I think my preparation was based on 3 aspects. First was my DAF. So Right. I prepared my DAF very extensively. Right. My home state is Rajasthan, but currently I'm in Madhya Pradesh. So I prepared both the states very extensively in terms of geography, Wow. the economy, the social situation, etc. Then I focused on the various cities I've lived in. So I Right. did comparisons Right. about what can be learned from one city and implemented in the other, and what are some flaws also in the administration and in general the city. And there were also personal questions about like hobbies or where all I've done my schooling, etc. And I prepared extensively on my internship in the United Nations. Right. And I think that really helped me, because almost 30-40% of the interview was based on that Wow. discussion. So I think preparing your DAF is key, because that will be something which will be visible in front of the board. और मतलब उन्हें भी questions पूछने में उससे comfort रहता है, क्योंकि वो जानते हैं वो आपकी strength के areas हैं. Correct. So they expect you to have an idea about what all you have done and what all has been key in your journey. Then the second aspect I focused on was the current affair. So उसके लिए I read 3 papers. I read Mint for my economics optional, and Hindu and the Indian Express. And in the Indian Express there was focus on the explain section. Right. And I think this is also very important, because current affairs is something which is visible for everyone and Right. it impacts everyone. So अगर उन्हें आपके DAF में शायद से अगर कुछ इतना important या कुछ बहुत ज़्यादा technical लगेगा, then they can move easily to the current affairs. And even for me, current affairs also played a key role, because there were a lot of questions from international relations about Indian Ocean, de-dollarization, etc. And so that was the second aspect of my preparation. And the third was the application part of my optional. So my optional is economics. Yeah. And economics is something I feel everybody has an idea and opinion about, Of course. because of what is happening in the Indian economy and the world economy. So I used to read the various opinions, as well as I used to prepare a lot of facts in economics about what is the comparison of per capita income, or what is the inflation rate, etc. So I think application part, or just the Indian economy and the global economy, was also something I prepared extensively on. And based on these 3 aspects, I used to give my mock interviews, and I gave 8 mock interviews for my preparation. Wow.
one was online, other Mm. 7 were in person. In person. And I think that really helped me in focusing on the presentation in terms of small details such as hand gestures, Right. or even the eye contact, or the smile you need to have on your Yeah, face, yeah, or just yeah. maintaining your cool in the interview process. Mm. And I think because of that, I think I did better in this interview. Yes. Okay. So how did you deal with the nervousness on the day of the interview? जो एक normal nervousness होती है, उस कैसे आपने how did you deal with it before entering the room of the interview? So I feel having that experience of last year taught Yeah, me yeah, that yeah. Nervousness would not help me, Not help. Okay. because I did decently well in my last interview also. But I think I was very nervous, and that kind of impacted my performance, Overall also what I was able to present to the board. Right. So this time I went with the attitude that I had to stay calm, and even if something happens, I will have to just be composed. Right. And I think just telling yourself or not associating yourself with the end result is also that helped me. I thought last time भी नहीं हुआ तो you have already seen that pain, and I think that helped me in keeping more calm and more composed, and thinking of it like a normal conversation, or just like what happens in mock interviews. Right. So that kept me calm and Right. not very nervous, as I was the last one to go, so I had to wait a Okay. good 3-4 hours Okay. before I interacted with the Okay. board. Okay. Yeah. All right. And obviously you scored an impressive 204 in the interview, which is a great score. Any advice that you have for candidates जो कि इस साल unfortunately एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए, शायद वो अगले साल एग्ज़ाम दे रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अपने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर चुके होंगे. आप अब एक सिविल सर्वेंट हैं, कुछ दिनों के बाद आपको अपनी पोस्टिंग मिलेगी, आप एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को कभी लीड भी करेंगी अगर आपको आईएएस आपको अलॉट होता है. तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि एज अ विजनरी नाउ यू नो व्हाट इज़ दैट एडवाइस टू सच कैंडिडेट्स जो कि बहुत सारी उधेड़ बुन में हैं अभी, जो शायद डीमोटिवेटेड होंगे, अपने आप को शायद फेलियर समझ रहे होंगे, आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगी? I would say believe in yourself, because that is the most important and something that would keep you going in this process. एक clear strategy बनाइए, उसके basis पे अपनी preparation base कीजिए, and success and failure तो इस examination का part है ही. तो जो failures भी है उससे अगर आप सीखें अपनी गलतियों से और उसे अपने successive attempts में utilize करें, so I think that would be something which will not leave any regrets in your mind. एंड जहाँ तक अटेम्प्ट्स की बात है, अगर कोई है जिसके सारे अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो आई फील जो इस प्रोसेस में हमने नॉलेज गेन करी है, जो मेंटल रेसिलियंस हम लोगों ने गेन करी है, हैविंग सीन सो मच अनसर्टेनिटी एंड प्रेशर, आई थिंक लाइफ में वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ में वो हेल्प करेगी ही. तो ऐसा मत सोचिए कि दिस इज़ यूपीएससी इज़ नॉट योर एंटायर लाइफ. आई थिंक इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड आई थिंक remembering that is something which can help you keep positive. So all the very best to everyone. ओके, थैंक यू. तो ये बताइए कि अब आने वाले कुछ समय में आप ट्रेनिंग में जाएंगी, तो अभी क्या प्लान्स हैं अभी बिटवीन यू नो आई मीन अभी का टाइम और आपकी ट्रेनिंग में ज्वाइन करने में शायद कुछ समय है, कुछ अपने प्लान्स के बारे में बताइए. हाउ डू यू इंटेंड टू स्पेंड द नेक्स्ट फ्यू वीक्स? आई फील थोड़े फ्रेंड्स और फैमिली नेग्लेक्ट हो जाते हैं इस प्रोसेस में, क्योंकि पढ़ाई Right. ज़्यादा चलती है. तो आई जस्ट प्लान टू स्पेंड टाइम विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, Right. एंड मे बी थोड़ी मिनी वेकेशंस ले लूँ और थोड़ी जगहें देख लूँ. सो Okay. दैट इज़ द प्लान फॉर नाउ. That is the plan. Thank you so much, Anoushka. It was a pleasure talking to you. We wish you all the best for your training, and I Thank you. hope कि आप इसी तरह से सभी लोगों को इंस्पायर करती रहें. Thank you so much. Thank you so much.